everybody, नमस्कार, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं। तो बहुत दिनों से मैंने कोई मेकअप लुक वाला वीडियो नहीं डाला है, सो इसीलिए आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ ये पर्टिकुलर लुक जो आप किसी भी तरीके की पार्टी में रिक्रिएट कर सकते हैं। सो वेदर यू वेयरिंग अ साड़ी और यू वेयरिंग अ ड्रेस, आप ये लुक किसी भी आउटफिट के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं हूँ परमजीत एंड आई पोस्ट ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट हियर। So I have over 150 videos on makeup, hairstyle, skincare, hair care, draping, and I also have a couple of vlogs and fun challenges. तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और मेरे वीडियोज़ आप मिस नहीं करेंगे। Now let's get started. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स बिगिन विद स्किन प्रेप। फेस वॉश कर लिया है और अब मैं लगा रही हूँ टोनर फ्रॉम अवीन। दिस इज दी अवीन थर्मल स्प्रिंग वाटर। अब मैं लगा लेती हूँ मॉइस्चराइजर फ्रॉम सेटाफिल। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ आई क्रीम विच इज फ्रॉम इनिसफ्री। दिस इज दी इनिसफ्री जेजू ऑर्किड आई क्रीम। और फाइनली लिप बाम के लिए मैं यूज कर रही हूँ बॉबी ब्राउन लिप बाम। आज मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ पहले, और इसलिए मैं सबसे पहले आईब्रोज कर लेती हूँ यूजिंग दी ABH ब्राउ पोमेड। एंड सिंस ये क्रीम प्रोडक्ट है तो इसे सेट करने के लिए मुझे एक पाउडर प्रोडक्ट चाहिए। सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दी बेनिफिट ब्राउजिंग्स। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं बेस लगा लेती हूँ एंड आई एम यूजिंग द पी लुई बेस नंबर 3 और इसे मैं अपने लिड्स पर अच्छे से लगाकर सेट कर लेती हूँ। आई मेकअप के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ ABH का सॉफ्ट ग्लैम पैलेट एंड आई एम यूजिंग अ लाइट ब्राउन शेड एंड अप्लाइंग इट ऑन माई क्रीज लाइन। आई एम फॉलोइंग इट अप विद अ डार्क ब्राउन शेड ऑन द आउटर V एंड ब्रिंगिंग इट टुवर्ड्स द इनसाइड अ लिटिल बिट। इसके बाद मैं एक चॉकलेट ब्राउन कलर ले रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग इट जस्ट ऑन द आउटर V एंड ब्लेंडिंग इट विद द ब्राउन कलर। नेक्स्ट मैं एक ब्लू कलर का शेड ले रही हूँ और इसे मैं अपने आई बॉल एरिया में लगा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट completely into the brown shade. Since I want the eyes to pop a little bit more, so I'm going to be using a shimmery blue shade on top of the previous blue color. एक आईलाइनर लुक क्रिएट करने के लिए मैं लैक्मे का ब्लैक काजल पेंसिल ले रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ an eyeliner with the pencil and then smudge it out with a brush dipped in black eyeshadow powder. Next, I applied my false lashes from CS Essentials and since eye makeup complete हो गया है तो मैंने नीचे का fallout पहले क्लीन किया and then I applied my primer from Benefit which is the Professional Matte Rescue. बेस मेकअप की फर्स्ट स्टेप में कलर करेक्शन के लिए मैं यूज कर रही हूँ MAC स्टूडियो फिनिश कंसीलर इन द शेड NW45 ऑन माई अंडर आई डार्कनेस एंड एक्ने स्कार्स एंड एनी अदर डार्कनेस ऑन माई फेस. Next, I'm applying the MAC Studio Fix Fluid Foundation in the shade NC40 and I'm using a buffing brush and blending it in place. If you want to know which brushes are to be used and how to purchase makeup brushes, I have a whole video on it which I will link in the I button above for you. Now I'm going in with my concealer and that's the Tarte Shape Tape Concealer and I'm highlighting my under eyes, bridge of my nose, the sides of my forehead and I'm blending it with a concealer brush. For contouring, I picked up the LA Girl Pro Conceal Concealer in the shade Beautiful Bronze and I'm applying it on the hollows of my cheek and on my jawline and sides of my nose and blending it. There's a whole detailed video on contouring which I will link in the I button for you. Next, for the blush, I've picked up a blusher from Sugar this time and applying it on my cheek area. And then to set my base, I've used the Chanel loose powder and lightly dusting it all over my face. To complete my eye makeup, I applied the blue eyeshadow on my lower lash line and blended it and finished it off with a mascara from Wet n Wild. For the lipstick, I picked up a neutral shade from Too Faced. This is the Melted Matte Liquid Lipstick. And then I followed it up with a dark pink lip liner from Maybelline Color Sensation.
And that's it you guys, that's the finished look. I hope आपको ये look पसंद आया होगा. And if you did enjoy watching this video, please consider liking and sharing this video with your family and friends. अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. It means a lot to me. Thank you for watching this video. मैं मिलूंगी एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए I love you guys so much. Take care and stay safe. Bye bye.